Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing good. I'm doing great as well, alhamdulillah. It's the last Ashra in Ramzan. I hope that all the good virtues that you are doing, you get reward for it from Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. All the prayers for everyone. Now, I am going to start this past perfect continuous tense today. Past perfect continuous tense के बारे में basically आज हम बात करेंगे. Past perfect continuous tense में we talk about events that had been happening in the past at some particular time. तो इसके structure के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले affirmative sentence. Affirmative जिसका हमने पहले discuss किया हुआ है, that is a positive sentence. Confirmation से affirmation, ठीक है. Affirmative sentence, positive sentence जिसको हम उर्दू में मुस्बत जुमला भी कहते हैं, जिसमें किसी काम का होना ज़ाहिर होता है, वो किस तरह फॉर्म किया जाता है past perfect continuous tense में. Let's watch. सबसे पहले subject action to plus auxiliary और helping verb had लगाया जाता है, plus auxiliary verb और helping verb been लगाया जाता है, plus verb plus ing, which is present participle, mind you, and fourth form of verb at the same time, plus object if there is any, plus since or for, plus time. Time reference से पहले since and for लगाते हैं, since और for लगाते हैं. So we'll talk about that later on. ठीक है. So मिसाल के तौर पे अगर हम पहला sentence बनाना चाहें, we had been traveling. We had been traveling to US since 1988. Since 1988. और for अगर हमने लगाना है उसके लिए कैसे करेंगे? We had been traveling to US for 10 years. We had been traveling to US for 10 years. For 10 years. For 10 years में अब हमें पता नहीं है कि वो 10 years कौन से थे, कब से स्टार्ट हुए, कब ख़त्म हुए, we do not know. ऐसी चीज़ के लिए हम for यूज़ करेंगे. लेकिन जहाँ पर हमें beginning या starting time का मालूम है, since 1998, since 1988, since 1885, जहाँ पर हमें time का मालूम है वहाँ पर हम since लगाएंगे. So this is how it works. Affirmative sentence, again, I would tell you guys how do we form affirmative sentence. Subject plus auxiliary had plus auxiliary been plus verb plus ing plus object plus sense of for difference, sense of for usage plus time reference. This is how we make affirmative sentence in past perfect continuous tense. Now let's talk about negative sentence. Negative sentence या मनफी जुमला कैसे क्रिएट किया जाता है past perfect continuous में. इसमें बेसिकली सबसे पहले सब्जेक्ट आता है एक्शन डूअर प्लस ऑक्सिलरी हैड. ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ किया जाता है प्लस नॉट. हैड के बाद, हैड की ऑक्सिलरी के बाद नॉट प्लेस कर देते हैं, फिर ऑक्सिलरी बिन आता है. सो इट मीन्स कि दोनों ऑक्सिलरी फॉर्म्स में नॉट प्लेस कर देते हैं प्लस वर्ब प्लस ing which is present participle or fourth form of verb plus object if there is any plus since or for plus time reference. अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं जो आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि मैंने auxiliary had और auxiliary been को affirmative sentence में भी अलहदा से मेंशन किया. I mean, I could have written there auxiliary had been, but I didn't do that. Reason for this is that in negative sentence or in interrogative sentence or in negative interrogative sentence, इन दोनों auxiliaries को basically इनकी usage और होती है. जैसा auxiliary had comes at the beginning, ठीक है, beginning in interrogative. Had I been, had we been. तो इस तरह से इनकी यूजेज अलहदा होती है. तो इस वजह से इनको सेपरेट रखा सो दैट कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो दैट वाई और हाउ हैव वी ब्रोकन ऑक्सिलरी वर्ब. देयर आर टू डिफरेंट ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब्स. दैट्स वाई हमने उनको प्लेस भी सेपरेटली किया था, उनको सेपरेटली प्लेस किया सो दैट यू डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, आपको कन्फ्यूजन ना हो. सो नेगेटिव तर्ज का जुमला दोबारा से हम देख लेते हैं. ऑक्सिलरी हैड प्लस नॉट, ऑक्सिलरी हैड के बाद सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी हैड प्लस नॉट, ऑक्सिलरी हैड के बाद नॉट प्लेस कर देते हैं
plus auxiliary been plus verb plus ing plus object if there is any plus since or for plus time reference. मिसाल के तौर पे we had not been, we hadn't been, we had not been or we hadn't been traveling to US since 1985. We hadn't been traveling to US for 15 years. For 15 years. So this 15 years can be any. That's why हम यहाँ पर for लगा रहे हैं. लेकिन जहाँ पर हमें एग्जैक्ट टाइम पता है since 1988, वहाँ पर हम टाइम के साथ बेसिकली एग्जैक्ट टाइम जहाँ पता है वहाँ पर हम since लगा रहे हैं. राइट. हैविंग सेड दिस, अब हम आएंगे जी इंटरोगेटिव तर्ज के जुमले के ऊपर. इंटरोगेटिव तर्ज के जुमले के ऊपर, सवालिया जुमले के ऊपर आते हैं कि सवालिया जुमला कैसे बनाया जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. ऑक्सिलरी हैड कम्स एट द बिगिनिंग. सवालिया जुमला बनाने के लिए, इंटरोगेटिव जुमला बनाने के लिए ऑक्सिलरी हैड जो है पहले लगा दिया जाता है सब्जेक्ट से. ऑक्सिलरी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी बिन प्लस verb plus ing which is present participle or fourth form of verb plus object if there is any plus since or for plus time reference plus question mark. Mind you, question mark बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में या उसकी फॉर्मेशन में, या नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में या उसकी फॉर्मेशन में. अगर हम कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे उसके एंड में इंटरोगेटिव पे या नेगेटिव इंटरोगेटिव के आखिर में, तो इसका मतलब है वुड बी मेकिंग अ ग्रामेटिकल मिस्टेक. ये ग्रामेटिकल एरर होगा जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए. सो नाउ कमिंग बैक टू दिस, इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह फॉर्म होता है. ऑक्सिलरी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी बिन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम रेफरेंस प्लस क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, हैड वे बिन ट्रेवलिंग टू US. US जो है ऑब्जेक्ट है, ट्रेवलिंग वेयर टू US, सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट. सो हैड वी बिन ट्रेवलिंग टू US since 1985 question mark, or had we been traveling to US for 15 years question mark. This is how we create interrogative sentence in past perfect continuous tense. Last but not least is negative interrogative. Negative interrogative जुमला कैसे बनाते हैं जिसमें नफ़ी भी आती है, नेगेशन भी आती है और साथ में क्वेश्चन भी पूछा जाता है. क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सवाल भी पूछा जाता है. कैसे बनाते हैं लेट्स से. इसमें भी इंटरोगेटिव तरह के जुमले की तरह ऑक्सिलरी हैड सब्जेक्ट से पहले आ जाता है. ऑक्सिलरी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑक्सिलरी बिन प्लस वर्ब प्लस ing which is present participle or verb's fourth form plus object if there is any plus since or for plus time reference plus question mark. This is how we create negative interrogative sentence. So auxiliary had plus subject plus not. subject के बाद हम not place कर देते हैं, उसके बाद auxiliary been लाते हैं. ठीक है, तो इसको दोबारा देख लीजिए. auxiliary had plus subject plus not plus auxiliary been plus verb plus ing plus object plus since or for plus time reference plus question mark. For instance, had we not been traveling to US since 1985 question mark, or had we not been traveling to US for 25 years question mark. This is how we create negative interrogative sentence in past perfect continuous tense. Now, having said this, guys, let's see these examples. I've had a couple of examples from each segment. For example, affirmative, negative, interrogative, and negative interrogative. Couple of them to do with since and for. One in each with since, and one in each with for. Excuse me. For instance, I'm going to read it out to you. I had been working on my project for 2 hours. I had been working on my project for 2 hours. It could be any 2 hours. इस वजह से for लगाया है. We had been working on our project since January 2021. अब टाइम एग्जैक्ट हमारे पास है
वहाँ पर हमने since लगा दिया, since January 2021. ठीक है. इसी तरह नेगेटिव तर्ज के जुमले, नेगेशन जहाँ पर आ रही है वो कैसे बनाए जाते हैं. I had not been working on my project for 2 hours. I hadn't been working on my project for 2 hours. We hadn't been working on our project since January 2021. We had not been working on our project since 2021. So this is how we create sentences in negative formation. Now, if we say interrogative, सवालिया जुमले कैसे बनाते हैं, जिसे हमने डिस्कस किया था. Had comes at the beginning. So had I been working on my project for 2 hours? Question mark. Or had we been working on our project since January 2021? अब आप देखें, had comes at the beginning. Had की auxiliary beginning में आ जाती है और question mark end में चला जाता है. So this is how we create interrogative sentences in past perfect continuous tense. Last but not least again is negative interrogative sentence. इसमें उसी तरह से had पहले आ जाता है. Had I not been working on that project for 2 hours. Had comes at the beginning and subject के बाद आप not place करते हैं, फिर been आता है. बहुत से लोग इनमें गलतियाँ कर देते हैं. आई होप कि अब जब जिस तरह मैं आपको ये समझा रहा हूँ फॉर्मेशंस, आई होप आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे. कई लोग इस तरह कर देते हैं, had I been not working, had I been not working, this is absolutely wrong. So had I not been, सब्जेक्ट के बाद आप not लगाते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव में, and then you place been. So had I not been working on that project for 2 hours? Question mark. Had we not been working on our project since January 2021? Question mark. This is how we create negative interrogative sentences in past perfect continuous tense. So that's about it for tonight. I will see you guys again inshallah. Look after yourself. Khuda Hafiz.